Hello everyone, Namaste, welcome to our new video. Warm welcome to my 2 crore taxpayers because I call you tax Vasim. Tax Vasim is a good name, na? It's better because हमको हमेशा अपने आप को याद दिलाना पड़ता है that we are a close-knit group and we are the actual, if you can say, if you can, for the lack of a better word, we are the people who are the real minority in this country who pay taxes and who sponsor funds and everything for the other 138 crore 2 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं और बाकी 138 करोड़ को एक्चुअली हम ही आप ही स्पॉन्सर करो whether we like it or not. Now, excuse me, Finance Minister has started deliberations and discussions with various institutes like institute मतलब associations, NASSCOM, industry bodies, SME का कोई होगा उनके जो रेगुलर तितर बितर हैं जो रेगुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने साइड से हमेशा सजेशंस देते हैं. They've started discussions pre-budget because budget में whatever changes the ministry wants to make एक दिखावा करना ही पड़ता है ना. ऑप्टिकल है, एवरीथिंग इज ऑप्टिकल इन द गवर्नमेंट दैट दे हैव टू शो दैट सी वी आर टॉकिंग टू इंडस्ट्री बॉडीज एंड देन वी आर प्रेजेंटिंग द बजट. भाई रियलिटी तो ये है, एक मिनट में आपके सामने थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. भाई रियलिटी ये है दैट if at all the industry bodies have told them अच्छा इतना टैक्स कम कर दो, इनकम टैक्स ये कर दो, वो कर दो, तो obviously the ministry is not answerable to anybody. They can take suggestions, they can invite consultations, but ultimately करेंगे तो वही जो उनको करना है. अच्छा अगर इंडस्ट्री बॉडी ने कुछ एक्स वाई जी बोला और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट निकाला तो उसके बाद वो अपोलोजाइज तो नहीं करेंगे ना, सॉरी यार आपने बोला था लेकिन इस बार नहीं हो पाया, अगले बार में सेटल कर. दैट डजंट वर्क लाइक दैट. सो व्हाई डू दिस शो ऑफ टॉकिंग टू बॉडीज. बजट तो आने वाला है आपका 22 जुलाई को, अभी एक महीने के ऊपर टाइम है, ऑलमोस्ट बन गया होगा या बनने वाला होगा. अच्छा बजट के दिन पे, बजट रिलीज करने के पहले या सॉरी बजट के एक दिन पहले एक हलवा सेरेमनी होती है. सच एन इंटरेस्टिंग नेम ना. हलवा पब्लिक को खिलाने के पहले वो आपस में फाइनेंस मिनिस्टर अपने हाथ से सबको हलवा डाल डाल के खिलाती है. दैट हलवा सेरेमनी, वो हलवा बनता है नॉर्थ ब्लॉक में और उसका मतलब है कि हो गया जी, बजट बन गया, अब हम रेडी हैं बजट पेश करने के लिए. मतलब इट इज सो symbolic, ironic, call it what you like, but that halwa ceremony really catches my fantasy sometimes. Acha, before this government came in, we used to have two budgets. One used to be the union budget, and the other we used to have a special railway budget alag se because railway is a huge department. लेकिन हुआ क्या कि eventually progressive, as you might think, both the budgets were combined and now we have the वन सिंगल बजट. उसमें रेलवे का एक सेक्शन आता है. खैर इंटरेस्टिंग, we'll have discussions amongst our own stakeholders at Profit Bhai and we'll see कि क्या क्या चीजें हम इस बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. who are the stakeholders. we'll have our own committee. हम खुद की अपनी एक कमेटी बनाएंगे यार. आज अगर टैक्स पेयर्स क्लब होता, इफ वी, देखिए 2 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, अगर 2 करोड़ में से इवन इफ वी गॉट टुगेदर 50,000 people, forget about a crore or a lakh. Even if we got 50,000 people together as a membership, as an association, we could have bloody gone and sat down with the finance ministry and put forward. हमारा एक तबका होता है, एक वजूद होता, बट अभी कुछ है ही नहीं. टैक्स पेयर्स यूनाइटेड कहाँ है? द मोमेंट वी से टैक्स पेयर्स का एक एसोसिएशन होना चाहता है, कुछ भी नहीं है उसके नाम. बाय द वे, मेरा एक सिस्टर चैनल है जो मेरे एक स्टूडेंट्स ने बनाया है. आप लोग प्लीज उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि वो पूरा पैसा हम लोग एक बच्चों के ही फाउंडेशन को दे रहे हैं. ये चैनल का भी और उस चैनल का भी मैं पिन कमेंट हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए. द नेम ऑफ द चैनल इज टैक्स पेयर्स क्लब, द टैक्स पेयर्स क्लब. उसमें हम लोग एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इनफैक्ट ऑन दिस चैनल ऑल्सो वेरी सून वील लॉन्च मेंबरशिप्स वेयर वी ट्राई एंड मेक गेट लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर ताकि हम एक एसोसिएशन बनाए. देखिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक एसोसिएशन है, सीएफएस का एसोसिएशन है, ऑडिटर्स का एसोसिएशन, इंजीनियर्स का है, डॉक्टर्स का है, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इवन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई सेक्टर का भी एसोसिएशन है. टैक्स पेयर्स का कोई एसोसिएशन नहीं है यार. दिस नथिंग. एनीवे, आज की कवर स्टोरी पे आते हैं. टुडे लेट्स टॉक अबाउट, because a lot of you are interested and we took this strategic drift towards mutual funds as well because
आपको मैं ये बात प्रूव करके रहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली ज्यादा कमाओगे, ज्यादा, विथ लेस टेंशन एंड लेस हैसल एंड विथ लेस प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यू कैन मेक गुड मनी इन म्यूचुअल फंड्स, है ना? तो लेट मी discuss the cover story today. We are going to talk about balanced advantage funds. Uh, yeah. So, as you can see on your screen, now there are various kinds of mutual funds: large cap, mid cap, small cap, flexi cap, hybrid, asset allocator, and balance advantage. And I'm sure a lot more. There are like 5,000 stocks होते हैं ना listed. तो करीब करीब मोटा मोटा 5,000 म्यूचुअल फंड्स है। कौन सा फंड चूज करे? एक अपने वो फाइनेंस विद शरण वाले आते हैं ना, शरण, उनका एड देख लेना। वो बेचारे, आई मीन, I think he speaks in Hindi. He tries his best. He's also from down south. God bless him. But वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा सही है, कौन सा फंड लेने का है? So it's a big thing to buy the fund. Do we base our analysis on the past performance, or do we, how do we discount the future performance of a mutual fund? Because discounting the future performance of a stock or a company is thereby a lot easier, because you have the balance sheet, you have the P&L, आपके पास डेटा होता है, तो आप कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो ये बहुत दूर की कौड़ी है ना। इसीलिए तो ओके, what is a balance advantage fund? Primarily, in simple terms, a balance advantage fund is a type of a hybrid mutual fund which will invest your money in equity as well as fixed income. Yani, the asset allocation, that is mixture of equity and fixed income in the portfolio, is called balanced advantage या balance arbitrage fund भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, depending on market risk capacity, the fund manager will shift his allocation: full equity, full debt, yeah, 80% equity, 20% debt, and so on and so forth. Now, to understand this more in a more clear manner, more clearly, I've given you an example of one of those balanced advantage funds. Mutual fund में एक बात आप सबको ध्यान रखनी है before we get into this example. Yeah, कि हमेशा हमेशा ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये देखिए क्या नाम है म्यूचुअल फंड का, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, राइट? XYZ name. With the same name, you will get direct plan growth, you will get IDCW, and you will get regular plan. Now, regular plan has a brokerage or a commission for the middleman involved, but direct plan for the same fund will not have any 1.5%. You will save 1.5% of brokerage or any kind of middleman commission. ये डायरेक्ट प्लान सेबी ने एक बहुत अच्छा काम किया था काफी साल पहले, आई थिंक 10-11 साल पहले। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस सिंपल चीज पता नहीं है, दैट वेन एवर यू आर बाइंग अ म्यूचुअल फंड, डोंट गो फॉर रेगुलर प्लान, गो फॉर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। तभी देखिए ये इसके नीचे देखो, रेगुलर ऑप्शन भी दिया है, फॉलो माई माउस कर्सर, रेगुलर भी है और डायरेक्ट भी है। आई हैव केप्ट इट ऑन डायरेक्ट, right? Now, this is one of the best. Okay, no stock idea or fund idea is a buy or sell recommendation. Any assumption of buying or selling is purely fictitious. You have to consult your financial advisor for before buying or selling any financial instrument. Now, if you look at HDFC Balance Advantage Fund Direct Plan Growth, सबसे पहले, this is one of the best performing balance advantage funds in the last 3 to 5 years. We'll have a look. इसका fund size देखिए, 83,000 crore. That's huge. I used to be impressed with a fund जिसका fund size होता था 20,000 करोड़, 25,000 करोड़। मैं पहले वो देखता था लोगों ने पैसा कितना लगाया। If people have invested 83,000 crore in this, that is huge, humongous. I mean, that means in some months ये 1 लाख करोड़ तक आ जाएगा। अच्छा, और दूसरी अच्छी बात, look at the expense ratio. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, this expense ratio is very low. 0.7% is very good. और कैटेगरी एवरेज देखिए 0.65, which is fair enough. NAV of the fund is 517, ये काफी ऊपर चल चुका है। बट आप म्यूचुअल फंड के NAV को स्टॉक प्राइस की तरह कंफ्यूज, यू कांट कंफ्यूज योरसेल्फ, दोनों अलग अलग चीजें। डोंट check a mutual fund the way you check stocks. We'll have a kind of a mutual fund symposium where we, मतलब
लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके बैठ जाएंगे. सी, दिस स्कीम हैज बीटन द निफ्टी 50 हाइब्रिड by a lot. Like in the last 1 year, this scheme has given 43% returns. Actually, we'll go down to the chart and see. ये देखिए returns का chart, returns का table दिख रहा है आपको? Chart नहीं है, table. अब इसमें they've given returns as on 24th May 2024. ठीक है, इलेक्शन के पहले तक का दिया है, कोई बात नहीं. But if I look here for the returns that they've given, 1 year में annualized is 43 as I said, and category average is 27. मतलब इस particular category में average return 27% रहा है और इस fund ने दिया है 43. That's humongous. And अपने category में this fund is second rank out of 28. तो I would definitely, simple ना, मैं कौन से fund में अपना डालूंगा? अगर मैं last year का performance देख रहा हूँ, this is second rank. अच्छा, 3 year परफॉर्मेंस देखो तो भी ये बीट करता है. 3 year में दिस फंड हैज गिवन 24% कंपाउंडिंग एंड कैटेगरी एवरेज इज 13%. एंड इन द 2 year एंड 3 year कैटेगरी दिस फंड इज द टॉप फंड. इसका रैंक है नंबर 1 आउट ऑफ 20. ये देखिए, इवन इन द 5 year कैटेगरी इसका रैंक है नंबर 1. इवन इन द 10 year कैटेगरी इसका रैंक है नंबर 1. सो 3 year, 5 year, 10 year, दिस फंड इज नंबर 1. अब इफ आई लुक एट अ 10 year रिटर्न, 10 year में इसका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है. 16% कंपाउंडिंग मेरे लिए तो आई एम वेरी हैप्पी. बट फॉर दी, बट भाई दिस इज अ बैलेंस एडवांटेज फंड. मैंने आपसे क्या कहा था? इफ आई हैव 100 rupees टू पार्क इन अ म्यूचुअल फंड, आई विल टेक 5 म्यूचुअल फंड्स. द बेस्ट लार्ज कैप फंड, द बेस्ट स्मॉल कैप फंड, द बेस्ट मिड कैप फंड, द बेस्ट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एंड वन मोर कैटेगरी, एक फ्लेक्सी कैप ले लूंगा या एक हाइब्रिड फंड ले लेंगे. बेसिकली वी डिवाइड एंड वी कीप आवर रिस्क सेपरेट. जितना डिवाइड करेंगे उतना अच्छा है. अगर 5 साल में मुझे ये 19% दे रहा है कंपाउंडेड, और इस कैटेगरी से बीट कर रहा है, हर ऑन एवरी काउंट इट इज बीटिंग द कैटेगरी, दैट मीन्स आई शुड बी वेरी हैप्पी. But in 5 years, if I'm getting 19.5% return compounding, I'm not, that's not a problem for me, because that means in 5 years this fund has given more than double. It's almost gone 2.5 times. मतलब if you had put your money here. अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है. लेट अस लुक एट एसआईपी रिटर्न्स. अभी देखिए, एसआईपी में हमेशा बोलता हूँ ना आपको, एसआईपी में पूरा गेम पलट जाता है. जैसे अपने पॉलिटिक्स में यूपी का चुनाव आते ही गेम पलट जाता है. लुक एट एसआईपी, look at 5 year annualized returns of SIP. See, SIP में क्यों रिटर्न ज्यादा है? See how much the difference is. 5 year में उधर कितना था? 19% कंपाउंडिंग. मतलब आपने पैसे डाल दिए और 5 साल you didn't touch your money. It was there. So it will given you 19.5%. But if you did SIP every month for 5 years, you made 27.22. And even in the 10 year category, you made more money. 16 point something था वहां पे, and here you have 18.84. Because simple logic, guys, SIP में in every dip the fund manager is buying. There is a fund manager. He's been kept over there, full time job for this thing only ना. तो वो तो हर dip में buy करेगा. Now let us have a look at the portfolio of this fund, right? क्या portfolio है? Equity is 66%. If you can see, equity is 66%. Then debt is 27%, and others में वो cash होगा, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला होगा, ठीक है. Now which are the top stock holdings in this fund? HDFC Bank 6%. बाप रे, HDFC Bank के साथ इस फंड मैनेजर ने इतना रिटर्न्स कमाया. कैन यू बीट दैट? जो स्टॉक, अब अगर आप बोलोगे मैंने HDFC Bank स्टॉक लिया था सर, मेरा तो इतना रिटर्न नहीं आया. Now you see the difference. For the last 4 years, the stock has been flat. 1400, 1500, 1600, 1400, 1500, 1600. यही स्टोरी रही है ना HDFC Bank. How come this fund has generated returns in the last 4-5 years with HDFC Bank being 6% allocation? Because आपका पैसा लिमिटेड है, फंड मैनेजर के पास रेगुलर SIP आ रहा है, तो वो हर स्टॉक में रेगुलर SIP कर रहा है फंड मैनेजर. And that is why when you do SIP, you are just acting like your own fund manager.
That's the beauty of making money via mutual funds, which a lot of you, आप लोग स्टॉक मार्केट में डैबल करोगे, पुअर गाइस, किसी का पैसा डूबेगा, बाद में आप रियलाइज करोगे नहीं यार ये म्यूचुअल फंड सही है। क्यों हमने कैंपेन को सपोर्ट किया, म्यूचुअल फंड सही है .com। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फैक्ट ब्रो, इट इज अ फैक्ट। ये कैंपेन, ये फंड, ये सिस्टम सबसे ज्यादा अमीर जो बना है वो रेगुलर एसआईपी से बना है। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कुडोस टू यू, बट स्टॉक्स और फंड्स के एसआईपी में एक डिफरेंस होता है, मैं आऊंगा उस पर। कोल इंडिया लिया है, पीएसयू हैवी दिख रहा है मुझे। कोल इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक हैवी, पीएसयू हैवी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड नहीं है हमारा फेवरेट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलो, सो ही हैज डाइवर्सिफाइड। अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो भी बनाओगे ना एसआईपी का, जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया करता था, इफ यू आर मेकिंग अ स्टॉक पोर्टफोलियो, ट्राई एंड डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट 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 सेक्टर्स। सो एल एन टी, रिलायंस, इन्फोसिस, घूम फिर के इट इज ऑल लार्ज कैप्स यार। मोस्ट ऑफ देम आर लार्ज कैप्स। अब आप बोलोगे सर यही पोर्टफोलियो हम बना लेते हैं, बनाओ, बनाओ, आगे जाओ और मुझे लाके दिखाओ 20% रिटर्न, मैं मान जाऊंगा आप लोग, आई अपलॉड यू। You cannot get 20% for 5 years with the same set of stocks because the fund manager keeps churning, keeps rotating his stocks, and you will not be able to copy paste it. If you think, matlab, I for sure cannot do this. I can put my money in the fund and I can analyze a stock for you and tell you as a training, but I can't, uh, you know, pick, copy paste the same portfolio and make it into something else. अच्छा, स्टॉक पिकिंग में और फंड पिकिंग में व्हाई वी कैनॉट, उसका बेसिक रीजन आपको बताता हूँ। सो द थिंग इज, if I do SIP in stocks directly, I need to have supernatural control on my instinct. I have seen this. This is not a problem where you don't know how to identify stocks. I can teach you how to identify stocks. You will learn it. You will invest. You will put for 5 years, 10 years. But there are two major challenges. Challenge number one, you will not be able to hold the stock beyond 3 years. I can challenge you. The moment the stock will be 4 times, 5 times its price, you will sell it. कमेंट में बताइए कितने लोग इस पॉइंट पे मुझसे अग्री करते हैं। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। एंड सेकंड पॉइंट इज, स्टॉक एसआईपी में द टेंडेंसी टू सेल इज वेरी फास्ट, एंड you will not have unlimited money like the mutual funds to buy on every dip, unless you are doing 5,000 rupees in the same stock every month. फिर भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चर्निंग आप नहीं कर पाओगे। एंड टुडे दे आर यूजिंग एल्गोरिदम्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैच एल्गो ट्रेडिंग एंड एल्गोरिदम्स एंड ऑल ऑफ दैट। अभी इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग इतना कमर्शियल, एट अ कंज्यूमर लेवल इतना कमर्शियल नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली हो जाएगा। देन वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू हैव अ फैबुलस टाइम फॉर द नेक्स्ट 10-15 years if we stay invested and do regular SIP. You guys can make tons of money, but please consult your financial advisor and then take a call. अभी हम लोग एक, let's have a look at the top funds. None of the funds are recommendations at all. Yeah. Now, if I see this website is ET Money, and best mutual funds for the last whatever 5 years में quant small cap fund, ये मेरा भी favorite है. But see, this is past performance. अच्छा fund है, no doubt about it. 51% returns per annum. Second rank in small cap out of 19 funds. लेकिन ये top fund, 51% compounding is super. It is amazing. I don't think, you know why quant ke funds top two mein aate hain? You know why this fund house is in the top? Because they are the first people, the first fund house to use algorithms. They started using algorithms way before. Look at the mid cap fund. Quant ka mid cap fund dekhiye. It's giving you 44% compounding here. I mean, it is unbelievable. देन मल्टी एसेट फंड में भी क्वांटी है लेकिन इसका AUM कम है। सी, दिस इज अ न्यू फंड ना, इस पे नजर रखनी चाहिए आपको। 2400 करोड़। एक काम करेंगे, इन वन ऑफ माय फर्दर वीडियोस ना हम लोग ये फंड को थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे, क्वांट मल्टी एसेट फंड। देन देयर आर ICICI प्रू, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, फोकस्ड इक्विटी। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फंड्स। ये बहुत पुराना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप,
I mean, if a fund is giving me 24.15% returns, and it stands number one category in 23 in flexi cap, I'm happy with this क्योंकि expense ratio कम है और assets under management again 66,000 crore. Oof, lot of money going into this fund, so I'm pretty happy. Now look at this, Mirai Asset, great consumer fund. ये भी कुछ thematic, you will get these kind of thematic funds, हाँ? थीमेटिक मतलब सेक्टोरल की पावर सेक्टर फंड या एग्री फंड या जैसे ये ग्रेट कंज्यूमर फंड. सो आई मीन यू विल हैव इट्स अ फंड मॉल एक्चुअली. फंड्स का एक मॉल है, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत संभाल के पकड़ना चाहिए. नाउ लुक एट दिस HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड. This is a this is a proper hybrid equity plan. It's a retirement solution saving fund, but even this fund has given you 21.8% returns. And it's a very new fund. It's a very new fund because सिर्फ 1400 करोड़ का पैसा लगा है, लेकिन रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में अच्छा फंड है. बाय द वे फन फैक्ट, HDFC स्टॉक इतना नहीं चला होगा आपके लिए, बट HDFC के जितने फंड्स है ना, दे आर आउट परफॉर्मर्स. क्वांट, HDFC and Mirai Asset. Quant Fund House, HDFC Fund House, and Mirai Asset Fund House. These are the three fund houses which personally I have found that आप अपने financial advisor से पूछिए, but these are the best fund houses, certainly. So this was all about mutual funds. Today we thought we'll give you this episode will cover more of funds. Now, जाते जाते, as always, towards the end, we'll talk about politics because I think the next 10 days, the next 2 weeks are going to be fabulous in terms of politics. You will see a lot of arm twisting. मेरे को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मुझे फंड्स चाहिए टू डोनेट मोर फॉर द गर्ल चाइल्ड, फॉर एडुकेटिंग एज मेनी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एज पॉसिबल. एंड जो मेरा कल का वीडियो था, yesterday's video, we had a correspondent from Delhi NCR, Dikshit. The things that he shared, the title of the video is How an MLA's Resignation is Wasting Taxpayers' Money. Please watch that video also, because I know that video is a different topic, but we took an experiment. We did an experiment so that we wanted to tell you हमारा पैसा कैसे जाके waste होता है, guys. अभी 24 जून यानी next Monday we'll have the Lok Sabha session, the monsoon session, and 26th या 27 June को the ruling party will have to prove its majority on the floor of the house, and that will be very important. I think it is going to be 26th June. If it is 26th June, mark my words, guys, 26th June, as per numerology, also as per my calculation, is going to be again a tough day, the same which we had on 4th June के जैसा लगभग मोटा मोटा. It's going to be very tough for the markets. 4th June तो हम बच गए. 26 जून अगर मेजॉरिटी प्रूव करने का दिन है, उसमें मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. टुडे दिस वीडियो इज डेटेड 17th June. Please be careful on your trading on 26th June. Yeah, whatever date comes out for the vote of confidence in the Lok Sabha, where the Prime Minister has to prove his majority in the Lok Sabha, because उस दिन, और अगर वो 26 को हुआ, देखिए स्टॉक मार्केट का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना 26 का आंकड़ा होता है. 26 डेट है और टोटल जो डेट का आ रहा है वो नंबर 4 आ रहा है. इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. यू डोंट वांट टू मेस विद दैट कॉम्बिनेशन. समथिंग वियर्ड कैन हैपन समवेयर ऑन दैट डे. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. either you will have some extreme rainfall somewhere, or you will have something. You have to be careful with dates like 17, 26, 8. These are all difficult dates. Look what happened today, 17 June. वो दार्जिलिंग में कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, देखा ना आपने. अभी अभी IT ना रेलवे मिनिस्टर अपॉइंट हुए, हमने इतनी तारीफ की. लुक व्हाट दिस गवर्नमेंट इज फेसिंग, गाइस. इट इज एक्चुअली फनी आल्सो, बट डिस्ट्रेसफुल फॉर मी एज अ टैक्स पेयर ऑल्सो. एक ट्रेन लास्ट हफ्ते में हुआ क्या, सरकार बनी, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, मिनिस्ट्रीज डिसाइड हुई, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो जीत गए इंडिया लास्ट संडे से. अभी ये संडे मंडे तक, आज तो मार्केट बंद थे, बट वी हैड अ नीट एग्जाम का डिजास्टर. नीट फॉर ऑल यू नो खाली नाम का है, देयर इज नथिंग नीट अबाउट NEET.
We had the railway accident and it's a big accident. बहुत साल बाद problem. We have problems in Jammu and Kashmir again because of some activity, anti-social elements and doing activity against India. Terrorism activity हो रही है JNK में. तीन तीनों विकेट डाउन सीधा सीधा एक हफ्ते के अंदर. Then we've had more issues. We have had political instability in Maharashtra where the government formation, state elections, हमने कल के वीडियो में बात किया था, वो जरूर देखिएगा. जिस तरह ये सब चीजें चल रही है, the Nifty is getting enough feelers and downside triggers. बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है. So I wouldn't, again, I stayed away from the market between 25th May and 4th June. I think I would like to do the same till the time the government does not clear the vote of confidence. And SIP, there is no change in my strategy, but for people who are trading, for people who are taking daily intraday, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं इंट्राडे का कुछ बताओ यार. इंट्राडे उस वो जहर है जो आपको कंफर्म प्रॉफिट दे सकता है या कंफर्म लॉस दे सकता है, लेकिन कंफर्म है उसमें. दैट इज इंट्राडे. एंड एवरीबडी वांट्स टू डू इट इंट्राडे एंड देन यू मल्टीप्लाई कि 365 डेज में से 200 डेज मार्केट वर्किंग है. 200 में से अगर मैं 100 डेज भी ये ट्रेड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा. ये गलतियां हम सब कर चुके हैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. You cannot have a fixed formula in the markets. You have to keep flowing like water. हमेशा पानी की तरह बहते रहना है विद द टाइड. टाइड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है. एंड यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन देयर इज हाई टाइड, which I'm telling you, we are approaching high tide in this month end and maybe in July as well. Trade with caution, talk to your financial advisor, and always keep watching your favorite bhai, Profit Bhai. Thank you so much. Namaste, Jai Hind, Jai Maharashtra.